Can you solve the profit and loss question in 20 seconds? Hello guys, and we'll continue. The market price of a bag is 2000. 10% discount is given, yet the shopkeeper earns 20% profit. मतलब एक मार्केट प्राइस का बैग का दाम है 2000, ओके, तो उसमें शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट दिया, आपने कितने परसेंट डिस्काउंट अर्न किया, फिर इसमें 20% प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो अभी हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो गाइज, ओके, सो व्हाट इज एसपी? एसपी इज इक्वल टू 2000 इंटू 90, ओके, बिकॉज यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिला हुआ था। 10% डिस्काउंट है तो 90% प्रॉफिट में इसने बेचा, ठीक है। 90% का मार्जिन रखा होगा, तो 2000 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100, तो हम लोग का एसपी लिख लेंगे। एसपी कितना है? 1800। अभी हम लोगों का प्रॉफिट, अभी जो एक पार्ट निकल गया एसपी, अभी हो शॉपकीपर कितने में भेज रहा है? स्टिल 20% का डिस्काउंट, तो 100 प्लस 20 इट इज 120। 120 कितने में बेचा? 118 1800 में, तो 100% कितना होगा? 1800 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। ये सब सीखना है तो मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाना होगा, परसेंटेज निकालना, डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने सब करके रखा है और सब लॉन्ग वीडियोस बनाया हुआ। यू हैव टू वॉच द वीडियोस इफ यू वांट टू लर्न। तो मेरा सीपी कितना आएगा? सीपी इज 1500. Step 1, Step 2, Step 2, Step 3, Step 4. In 3 steps, okay? Step 3, I'm insisting, Step 3 I've completed it. Next question है, a trader sells an article at 20% profit. If the cost price is increased by 25%, एक आर्टिकल बेचता है 20% प्रॉफिट पर, x है, x प्लस 25% प्रॉफिट में बेचता है, and cost price is increased by 25, both, but the SP remains the same. कॉस्ट प्राइस बढ़ा देता है बट एसपी रिमेन्स द सेम. व्हाट इज द न्यू लॉस ऑन प्रॉफिट परसेंटेज? ओके, सो वी हैव टू टेक आउट टू थिंग्स इन वन. We'll solve the question answer in the base of assumption XYZ and 3 to 4 step. Let's say let CP is equal to 100, therefore SP is equal to 120, therefore loss is equal to, I'm doing in front of you, loss is equal to 125. What is that? 125, okay. 125 minus 120 is equal to 5, okay. Therefore loss percentage is equal to 5 divided by 125 into 100, okay. So 5 by 125 into 100, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25, 4. Therefore loss is equal to 4%. See, hardly in front of you 4 seconds, okay. That's why I'm insisting on you. You need to practice on all these guys, okay. So practice. Always identify the question problem, okay. What we have to read. See what I've solved, okay. You have to solve, I've solved it and you have read it nicely. Read the question, answer once, twice, thrice, and you are able to solve it. So these are all day 4 completed. I'll come in day 5 with some new concept in same person and question, okay. As of now we have completed profit and loss. I'll move to the next day 5. Do press the bell icon for such videos. Thank you guys.